Okay, so we're going to start today a new topic, density of states. And first, maybe I tell you what we're going to discuss in this part. So the first thing we're going to discuss is about the density of state expression in one dimension. Then we will discuss also in 2 dimension and also in 3 dimension. We're going to solve or solve the density of state expression for the different types of particles. For example, we will try to solve density of state for, I can say, let us say, following particles. So in this particle, we're going to have first is the free non-relativistic electrons. Then we will again solve for the same thing, but now for the relativistic electrons. Then we will also try to solve for photons, also for the phonons, but I will do this calculation for the phonons in non-dispersive medium. And in the last, I will discuss this density of state for the magnons. So these are the parts we're going to discuss today. And I hope you already aware with these particles called phonons and magnons. But still I can tell you a little bit about. So photons, of course, you know, they are the quanta of the EM waves, am I right? Electromagnetic waves. Whereas when you talk about phonons, so phonons are the quanta of the elastic waves. So you can write also maybe phonons are the quanta of the elastic wave. So when I say elastic waves, means wave produced inside solid. So remember one thing that when a wave propagate, wave always carry energy. For example, in the case of photons, for example, you take the case of sun. So you know that I mean inside the sun, because of nuclear reaction, a huge amount of energy produced, and this energy is carried out, all right, carried away with the help of EM waves. But these EM waves are nothing but made of a small quanta of energy. So the one quantum, all right. So this one quantum of energy, is what is known as photon. Okay. In the case of EM wave. So this EM wave is made of a large number of photons, and generally when you write down the energy of such now waves, so you write like n time h nu. So this h nu here is known as the energy of the one photon, and this n is the number of photons. Okay, and this h nu is the energy of one photon. So this way you can see that is the idea about photons. So photons, I can simply say that they are nothing but actually quanta of EM waves. Remember, wave has only one purpose.
the purpose of the wave is to transfer energy from the one place to the another place. So for example, let us say this energy will travel, and let us say here on the earth, this energy going to reach, but this energy coming from the sun is actually carried away by the wave. And the wave here we call as the EM waves. And these EM waves, for example, have a different frequencies. So you can divide into all the EM spectrum, starting from the radio wave to the gamma rays. But the point of discussion here is that the wave has only one purpose. The purpose of the wave is to transfer energy from one place to the another place. And these waves are always made of a quantum of energy. And in the case of EM wave, this quantum of energy known as the photons. But in the case of solid, so when you think about a case of solid, so in the solid, you can see that there are many atoms, and these atoms are attached together through electromagnetic forces. And when one atom, because of any reason, if you disturb one atom, then this oscillation is going to also let neighboring atom oscillate. So for example, when you deposit some amount of energy here, okay, so because this energy, these atoms start oscillating, and this oscillation transfer to the neighboring atom, and this way this energy going to travel in the solid. So there is a wave produced here, and this wave is what is known as the elastic wave. Okay, and the quanta of this energy is what is known as the phonons. So phonon is nothing but the quanta of the elastic wave. And elastic wave kya hai? Elastic wave is the wave produced inside the solid because of the atomic oscillations. Similarly, in case of solid itself, there are a class of materials called magnetic material. So see, in the magnetic material, for example, the case of ferromagnets, you can see that each atom act like a magnet. So there are these magnets are nothing but represented by a spin. Okay, so these are the spin. So if there are many atoms, and each atom is acting like a magnet, so remember the one spin is act like a magnet. I will discuss in detail about this spin property. So magnet means this side become north pole, then this side become a south pole. So you can see there are many magnets, many spin, many magnets, and these magnets are aligned parallelly. And because of any reason, let us say if one magnet displace from their mean position, let us say if it is like this way and then displace like this way, then what's going to happen when this magnet displace, because this is north pole and this is also north pole, so this north pole going to create a force on this north pole, so this also going to deviate, this also going to deviate, this also going to deviate, and this also going to deviate. So after some time, these magnets again going to come back. So pehle kya tha, aise tha, it will displace like this way, and again come back. I'm right. So when it is going to come back, then all the magnets going to come back. I'm right. So this you can see that this spin going to oscillate. So if you disturb one spin, then all the spins going to disturb. As a result, there will be a wave produced. Okay, and this wave is called spin wave. Okay, and the quanta of this spin wave is what is known as a magnon. I hope समझ में आ गया आप लोगों को एटलीस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन कि ये दो जो और ना क्वाजी पार्टिकल जो मैंने मेंशन किए हैं phonons and magnons, what they are. Right, so I can simply say photons are the quantum of energy of EM waves. Phonons are the quantum of energy of the elastic waves inside the solid, and magnons are the quantum of the energy of the spin wave inside a ferromagnetic material.
And in this topic, we're going to now actually find out the density of state for these particles. Okay, we will start with the expression, how to write down the density of state in 1D, 2D, and 3D, and then we'll try to solve the density of state for these particles, and we will solve in 1 dimension, also in 2 dimension, and also in 3 dimension. सर Yes. सर फोनॉन के बारे में सर बता दीजिए फिर से सर। फोनॉन्स ना अब समझो, देखो जो मैंने बताया वेव्स क्या होती हैं। अच्छा बताओ वेव्स का पर्पस क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एग्जैक्टली जैसे मान लो कि एक बड़ा सा पॉन्ड ले लिया आपने, ओके, सो इमेजिन दिस इज अ वाटर पॉन्ड, और आपने क्या किया, यहां पर सेंटर में एक स्टोन ड्रॉप कर दिया इसके पानी के बीच में, तो क्या होगा, this stone is nothing but when it's going to hit the surface of water, it's going to deposit energy in the water surface, all right? As a result, what's going to happen? You can see the ripples going to produce, and these ripples going to travel outward, and after some time you can see that these waves, ना इनको हम क्या बोलते हैं, water waves, and these water waves are going to travel in the water pond. If you're standing somewhere here, तो कुछ समय के बाद ये जो water waves हैं यहाँ पे hit करेंगे आकर, तो ये water wave क्या कर रही हैं, जो energy आपने produce किया यहाँ पर, the energy you produce at the center, these waves going to carry this energy from this position to this position. So waves have only one purpose, to transfer energy from one location to the another location. Now the same thing you're going to see is going to happen in the solid. Now imagine you have a crystal, and but in the crystal you have a large number of atoms attached together, and because of some reason, let us say कि अगर आप इस atom को disturb करते हो, only one atom, maybe you can hammer it, you can displace, means you're going to deposit some energy to this atom, and this atom displaced, तो क्या होगा, ये neighboring atom displace होगा, ये भी displace होगा, ये भी displace होगा, I mean this atom later on going to oscillate, ये भी oscillate करेगा, एक wave produce हो जा रही है, and this wave is what is known as the elastic wave. यहाँ पर you can call water wave, in the case of sun you can call EM wave, in the case of solid you can call elastic wave. So elastic wave is nothing but the wave produced inside solid because of the atomic oscillation, and the quanta of energy of this elastic wave is what is known as the phonons. Okay, so phonons are nothing. So like I wrote in the case of EM waves, here also in the case of phonons, you can write like n time h cross omega. So this h cross omega is the energy of the phonon, and n is the number of phonons. So when this energy travels, then this energy is made of a small tiny quanta of energy, and this quanta of energy is what is known as the phonons. Is same like a photons. जब भी आपको difference create, जब भी समझना है phonons के बारे में, तो just you can take example of photons. जो understanding photons की है, the same understanding you can apply also for the phonons. But फर्क इतना है कि जो photons होते हैं, they are quanta of the EM waves, and EM waves can travel in a vacuum also. जबकि जो phonons होते हैं, they are the quanta of elastic wave, and elastic waves can travel inside only solid. It's same like a water wave also. Is this clear, this concept now? Yes sir. Yes, sir. Now see, each and every wave in the nature carry energy, and when they carry energy, so this energy is actually made of a small bundle or packets, no? And these packets is called quanta of energy. And this one quanta
In the case of EM waves is called photons. In the case of elastic waves is called phonons. In the case of spin wave is called magnons. All right. But to take some other example, you can think about the case of plasma. In the plasma also you can disturb the plasma. The plasma going to oscillate, and this is going to create a wave called a plasma wave. And there, this quanta of energy is called plasmon. तो जहां जहां पर वेव है वहां पर एनर्जी का कैरी हो रहा है, and this energy is nothing made of a small quantum of energy particles, and this quanta is going to have a different name depending upon the waves. All right. Yes, sir. Good. तो क्लियर है हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आज ये सारा टॉपिक. And this is a very, very important topic because the density of state is a backbone of the solid state. And I can tell you that remaining part now in the solid state solely depends upon the density of state. So you need to understand how to write down the density of state in 1 dimension, 2D and 3D, and using this expression how to calculate the density of state for the different type of particles. And I can assure you, if you listen me carefully for the next 1.5 hours, then I can assure you that you're going to be very confident in handling the density of state expression for any type of particles in the nature. Okay, so shall we start then? Yes, sir. So we're going to understand the density of state now. So the first thing I'm going to do to solve this in 1 dimension. So the first thing I'm going to take here, the let us say case number 1. So case number 1, I can say I can divide in 2 parts. So in the first case, I can deal the system which have a defined boundaries. Okay, so I will deal this density of state for the bounded medium. And the bounded medium always going to be non-periodic, so I can also say it is a non-periodic system. So that is the case number 1. And to understand this one, let us take such case now, like a bounded medium. So here, let's take example of a rope tied between 2 walls, and this rope, let us have a length 0 to L. So when you're going to pluck the rope from this end and then you leave it, then this rope can oscillate up and down. Yes, मतलब sir. इस एंड से अगर आप इसको थोड़ा सा प्लग करके छोड़ दो तो ये रोप ऑसिलेट करेगी, and this rope can oscillate. In this manner. Now when the rope is oscillating in this manner, then what is the lambda here of this oscillation? L by 2. It will be 2L, because this is just half wavelength, right? The one wavelength you have to complete like this way. So the wavelength will be then 2L, right? So this oscillation produce a wave of wavelength 2L. Similarly, this rope even can oscillate in the next mode also. So the next mode I can say is this one. And what is the wavelength here then?
Lambda equal 12. Exactly. So I can just simplify, right, like a 2L by 2. The third mode also we can define. So third mode mein this rope can oscillate like this way, and here lambda then become 2L by 3. Maybe I can define one more mode. Let's call the fourth mode. Like this way, and here this lambda will be then 2L by 4. Similarly, I can talk about the, let us say, nth mode, now the last mode. So the last mode may be of this nature. I mean, there will be many such. And let us say this is nth mode, so the lambda I can call 2L by n. So I'm starting with a very simple example. Simple example of a rope. So the one rope can oscillate in different modes. So this is the first mode of oscillation. This is the next highest mode of oscillation. ये उसका higher oscillation है. So these are known as the mode of oscillations. Now you can relate this now in the quantum system. For example, you can think about the particle trapped in a one-dimensional box. So when the particle trapped in a one-dimensional box, then this is the ground state. I'm right? Yes, sir. आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में ना, wave function of the electron trapped in the one-dimensional box. So in the ground state, in the next higher state, उसके बाद third state, fourth, and so on. So this rope example also is analogous to the particle trapped in a 1D box. So you try to understand, in the classical mechanics, these oscillations are called modes, am right? First mode, second mode, third mode, am right? But in the quantum system, these modes are known as the quantum state. So I can say the modes and the quantum state. They are analogous to each other. Generally, we use the word modes in the mechanics, right? But in the quantum system, the same thing we call as the quantum states. Now, you can also try to understand here that this one mode, which has a wavelength lambda equal to L. Now, understand that this rope can oscillate vertically like this way. I'm right? I mean, in this plane of the board. But you also try to understand, with the same wavelength, this rope can oscillate vertically also, perpendicular to the board. Yes, sir. So with the same frequency, this rope can oscillate up and down and also vertically. So there are two modes with the same frequency. So generally what we say, when there are two modes of a same frequency, then these modes are degenerate, right? When there are two modes with the same frequency or same wavelength, then we call these modes as a degenerate modes. In the quantum system, also you frequently encounter this case that there are states with the same energy. Am I right? Yes, sir. So if there are 2 or 3 states with the same energy, then we call them degenerate states.
So सर here, मोड वाला कॉन्सेप्ट सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। मोड एक बार बता दो। मोड मतलब क्वांटम स्टेट है, थोड़ा कैच नहीं कर पाया। so देखो मैं मोड क्या बता रहा हूं। मोड एक वर्ड है जो यूज करते हैं कि when this rope, एक क्लासिक एक रोप ले लिया, when the rope is oscillating, तो ये तो एग्जांपल आप घर में भी कर सकते हो ना। यू कैन टेक वन रोप और उसका एक हिस्सा यू कैन टाइड विद द वॉल एंड देन उस रोप को ना आप हाथ से हिलाना शुरू करो इस एंड से, ठीक है। जब उसको ऑसिलेट कराओगे तो दिस रोप कैन ऑसिलेट इधर इन दिस मोड, ऐसा आपको पिक्चर मिल सकता है ऑसिलेशन का, या फिर ऐसा मिल सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा ही पॉसिबल है। अगर आपके पास बहुत हाई प्रिसिशन है तो यू कैन इजीली ना प्रोड्यूस द फर्स्ट वन, और इसको थोड़ा सा तेज करोगे ऑसिलेशन तो यू कैन मूव इनटू द सेकंड वन, राइट। थोड़ा सा और फास्ट ऑसिलेशन कराओगे देन यू कैन रीच टू द थर्ड वन आल्सो। तो ये पॉसिबल है। आई थिंक इतना क्लियर है सभी को कि कैसे ना ऑसिलेशन हो रहा है रोप का। यही जो ऑसिलेशंस हैं, जैसे कि ये फर्स्ट वाले ऑसिलेशन है, अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस किया जाए मैथमेटिकली तो मैं कह सकता हूं कि एक वेव है जिसका कितना वेवलेंथ है 2L। जो दूसरा ऑसिलेशन है उसका कितना वेवलेंथ है L, तीसरे का 2L/3 एंड सो ऑन। नाउ क्लासिकल सिस्टम में हम क्या कहते हैं कि इसी ऑसिलेशन को ही, ये जो फर्स्ट ऑसिलेशन है इसी को हम क्या बोलते हैं मोड्स। तो ये पहला मोड ऑसिलेशन का है, so this is the first mode of oscillation, this is a second mode of oscillation, this is third mode of oscillation and so on। ये क्लियर है मोड कॉन्सेप्ट एटलीस्ट सभी को? सर यस सर। बताओ। वेवलेंथ 2L कैसे हो गया सर? देखो ना, ये एक वेव जो है ये तो आधी वेव है ना, पूरी वेव तो कैसे बनेगी? ऐसे करके एक वेव ऐसे पूरी होती है ना। मान लो ये वेव स्टार्ट यहां से हो रही है, एक वेव कैसे कंप्लीट होती है? ये कंप्लीट वेव है, राइट? यस और नो? यस सर। So when this is complete wave, then from here to here, you call lambda, right? और यहां पर मैंने क्या यहां पर क्या है, ये जो वेव है सिर्फ इतना ही है, राइट? तो अगर ये 0 से लेकर L तक का लेंथ है तो लैम्डा कितना होगा? 2L। अभी जो आपके पास क्या है 0 से L तक ही शो किया हुआ है, तो पूरा जो वेवलेंथ कितना बनेगा 2L का। और यहां पर देखो नेक्स्ट वाले में पूरी वेव ऐसे दिखाई दे रही है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का कितना वेवलेंथ होगा? लैम्डा। और ये लेंथ कितना है? L। तो कितना जाएगा? L के बराबर। अब समझ में आ गया? हाँ सर समझ गए। गुड। यस सर। तो और मोड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मोड क्यों बोल रहे हैं हम इसको? बस नेमिंग है, इन्हीं को ही ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं मोड्स ना। फर्स्ट मोड ऑफ ऑसिलेशन, सेकंड मोड ऑफ ऑसिलेशन एंड थर्ड मोड ऑफ ऑसिलेशन। नाउ इन द क्वांटम सिस्टम, अब जब आते हो तो क्वांटम सिस्टम एग्जांपल ले लिया आपने, पार्टिकल इन अ बॉक्स। जब पार्टिकल इन बॉक्स की बात करते हैं, मान लो पार्टिकल ट्रैप्ड बॉक्स के अंदर, तो ये भी आप पढ़ते हो ना, ये आपका फर्स्ट वेव फंक्शन है, ये सेकंड वेव फंक्शन है, राइट? यस सर। ये कुछ नया तो नहीं कर रहे हम लोग। तो ये जो हमने एग्जांपल लिया है रोप को लेकर, वो सेम एग्जांपल यू कैन सी आल्सो इन द केस ऑफ पार्टिकल ट्रैप्ड इन अ बॉक्स। बट यहाँ पर ये जो स्टेट्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम स्टेट। यहाँ पर इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग? मोड्स। तो जो मोड्स हैं दे आर एक्चुअली एनालोगस टू द क्वांटम स्टेट्स, दैट इज द मीनिंग। बताओ यहां तक कोई अगर डाउट है तो। सर जो डीजेनरेसी का कॉन्सेप्ट है वो क्वांटम में देखते हैं हम, है ना? डिजेनरेसी हर जगह होती है। जैसे मान लो मोड्स की बात कर रहे हो, अगर ये जो यहाँ पर डबल डिजेनरेसी है, क्योंकि ये जो रोप है ये ऐसे भी Yes, ऑसिलेट sir. कर सकती है और ऐसे भी कर सकती है। तो हम इसको क्लासिकल सिस्टम में क्या कहेंगे सर? मतलब ऐसे भी, मतलब और एंगल पे भी कर सकती है ये, तो मतलब दो ही जरूरी नहीं है, मतलब 45 पे भी कर लो। नहीं, वो 45 पर तो नहीं होगा ना, क्योंकि 45 पर तो फाइनली वो रिजॉल्व करके दो ही मिलेंगे आपके पास। ओके सर। ओके।
जैसे ऑप्टिक्स की बात करते हैं ना, आप ऑप्टिक्स में क्या बोलते हैं, टू स्टेट्स ऑफ पोलराइजेशन, राइट? यस सर। तो वही चीज है, जैसे मान लो ऑप्टिक्स में एक जो वेव है उसकी जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि या तो एक्स पोलराइज होगा या फिर वाई पोलराइज होगा। ऑल राइट सर, थैंक यू। नाउ अब आते हैं हम लोग, इतना क्लियर है सभी को कि ये जो है दे आर कॉल्ड मोड्स इन द क्वांटम सिस्टम, दे आर कॉल्ड स्टेट्स। एक्चुअली हम लोग कहां डील कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद द क्वांटम सिस्टम, राइट? सो वी आर डीलिंग विद द स्टेट्स। तो अभी आप क्या करो, you must write down now the meaning or definition of the density of state. ये आप लिख लो, density of state defined as number of quantum states density of state defined as number of quantum states per unit energy range. Number of quantum states per unit energy range per unit volume. Number of quantum states per unit energy range per unit volume. तो ऐसे दो तरह के डिफाइन करते हैं, एक में तो हम लोग वॉल्यूम डिवाइड करके लिखते हैं और एक में विदाउट वॉल्यूम से डिवाइड करके लिखते हैं, ठीक है? तो ऐसे भी डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज। तो दोनों डेफिनेशन आप लिख सकते हो, दोनों ही यूज होती है डिपेंडिंग अपॉन कहां आप काम कर रहे हो, बट टेक्निकली आई विल गो विद दिस वन हियर इन दिस केस, डेंसिटी ऑफ स्टेट डिफाइंड एज द number of quantum states per unit energy range. Now this is very much similar like a number density. So first I will not tell you some analogy. Number density कैसे define करते हैं, like for example in the case of 3D क्या बोलोगे, number of particles per unit volume, am I right? ये 3D में हो गया, 2D में क्या बोलोगे, per unit एरिया, 1D में क्या हो जाएगा, per unit length. So this density of state is very much similar like a number density. But फर्क कितना होता है कि in the number density you would say number of particles per unit volume or per unit area or per unit length. Now let's not try to make it more specific. Let's make it 1D case, क्योंकि हम 1D case यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. So I can call number of particles per unit length. Number of particles per unit length. और यहां पर क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज. तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करते हैं, जैसे मान लो आपके पास ये कोई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर आपने बहुत सारी बीड्स डाल दी हैं, मान लो ये पहली बीड है, ये दूसरी बीड्स है. एग्जांपल ले लिया आपने कि इस तरह कोई वायर है, उसमें बहुत सारी बीड्स हैं. कोई माला ले लिया आपने, कोई माला में बहुत सारी बीड्स हैं. तो क्या नंबर डेंसिटी होगा, निकाल सकते हो आप लोग सिंपली, जो कैन काउंट द नंबर ऑफ बीट्स एंड डिवाइड बाय द लेंथ. ये क्या बन जाएगा, नंबर डेंसिटी. वेयर एज
ये नंबर डेंसिटी में देखो वेरिएबल क्या होता है x, x इज वेरिंग, लेंथ वेरी कर रही है, आप क्या काउंट कर रहे हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो एज यू से नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वेरी क्या कर रहा लेंथ, तो डिवाइड बाय द लेंथ इज कॉल्ड द नंबर डेंसिटी. बट इन द केस ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट you count the number of states. Now see, this is the first state, second state, third state, and fourth state. Like a first bead, second bead, third bead. So you count the number of states here. But what is the variable here? Energy. Energy. In the case of beads, what is the variable? Length. And in the case of quantum states, what is the variable? Energy. Is a very analogous, very similar. So here you say number of beads per unit length. तो यहाँ पे क्या बोलोगे? Number of states per unit energy range. Am I right? Are you able to understand these two definitions and similarity between them? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what I'm going to do now, I will start with this now our classical case, and I will develop some basic formula, and this I can take back to this quantum system, and then we'll try to find out the density of state also. Now coming back to this now, this concept here of beads, let's say. So just for the sake of example, let's assume that this is x equal to 0, the length starts from 0, और यहाँ पर x जो है और यहाँ पर जो लेंथ है वो है लेट अस से 100 सेंटीमीटर. And these beads, let's imagine they have a equal separation, let's say 2 centimeter each. I'm giving one analogy to understand. Write down the formula for the density of state. So if bead separation is 2 centimeter and the length of the total string is 100 centimeter, so can you tell me how many beads are there? 50. 1 per 49 total. 51. 50 beads, Total. right, total. And of course, this you know already. कैसे आपने निकाला है? कैसे solve किया आपने? कि कैसे मालूम चला कि total 50 beads होंगी? 100 divided by 2. 100 divided by 2, I'm right? देखो हम क्या करते हैं, अब हम एक यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूं मैं, ठीक है? You can write down. I'm going to define, let us say, gx and dx. आप लिख लो इसको. This is the number of beads in interval x and x plus dx. So I define a function gx dx as the number of beads in interval x and x plus dx. So maybe you can mark this as the x, and somewhere here you can mark x plus dx, and then in between this range you can find the number of beads, और वो कितनी है? gx dx. जैसे इमेजिन करो अगर एग्जैक्टली ये देखो, ये जो x अगर 0 है, जैसे आपने कैसे सॉल्व किया, नंबर ऑफ बिट्स कैसे निकालोगे? 100 डिवाइड बाई 2, हम राइट? तो अगर किसी रेंज में निकालना है x और x प्लस dx में, तो क्या करोगे? यू कैन टेक द टोटल लेंथ, हम राइट? यही होगा ना, टोटल लेंथ ले लो. जैसे अभी आपने यहाँ पर किया, क्या किया? 100 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर. अगर इस रेंज में निकालना है, so in this range what you can do, you can take the total length. कितना होगा total length? X plus dx plus x plus 2. Exactly, x plus dx minus x divide by 2. So this is simply dx by 2. So dx is telling you the length of this segment divided by the interval. So this becomes the
total number of bits in the interval x and x plus dx. And I'm going to define one more function, let us say rho x. ये लिख लो आप, ये है density of bits. कितना होगा बाय द वे डेंसिटी ऑफ बीट्स? कैसे निकालोगे इस पूरे लेंथ के लिए? gx dx upon dx. gx of dx divided by dx. तो मान लो आपके पास नंबर ऑफ बीट्स कितनी है? 50. तो डेंसिटी कितनी By होगी? length. By बाय length. लेंथ, राइट? तो फार्मूला क्या होगा यहाँ पर? नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट मींस नंबर ऑफ बीट्स डिवाइड बाय लेंथ. आई एम जस्ट टेकिंग बेसिक फार्मूला जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है. तो नंबर ऑफ बीट्स कितनी है? gx dx. और लेंथ कितना है? dx. Is this clear, this concept? Basic now formula, how to calculate the number of beads in a string and how to calculate the density of the beads in that string. Yes. सर एक बार ये बता दीजिए x plus dx minus x कैसे लिखा? आप मुझे ये बताओ कि ये टोटल जो लेंथ है स्ट्रिंग की, इसमें कितनी बीट्स हैं? 100. हाउ? सर टोटल तो 50 है. हाँ, ये तो 0 तो 50 कैसे निकाला आपने? so 100 total upon इंटरवल, yes sir, टोटल लेंथ इंटरवल, राइट? yes sir. तो x 0 से लेकर x 100 सेंटीमीटर के बीच में टोटल बीट्स आपने निकाली, टोटल लेंथ डिवाइड बाय द इंटरवल. Interval. नाउ अगर आप टोटल लेंथ की जगह पर में किसी स्मॉल लेंथ में निकालना है तो वही तो होगा फॉर्मूला, टोटल लेंथ डिवाइड बाय इंटरवल. तो लेंथ कितना है इसका, इस स्ट्रिंग का, इस सेगमेंट का? dx, राइट? मतलब x प्लस dx माइनस x, x प्लस dx yes. माइनस x. बताओ मेरे को यहाँ तक, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि नंबर ऑफ बीट्स कैसे लिखी हैं और डेंसिटी ऑफ बीट कैसे लिखा है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट क्वांटम स्टेट के लिए बहुत सिंपल समझना है. सर gx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिपीट योर क्वेश्चन. सर ये gx dx है ना, तो gx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? मैंने जस्ट एक फंक्शन बता दिया ना, फंक्शन का कोई ऐसा ना उसके अंदर जो पार्ट्स है उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? जैसे मान लो कि आप किसी फंक्शन को fx भी कह लो, मैटर नहीं करता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये एक फंक्शन है, नाम है, ठीक है? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ये है आपके पास नंबर ऑफ बीट्स इन द इंटरवल x एंड x प्लस dx. ओके सर. समझ में आ गया? कैन वी गो फर्दर अहेड नाउ? कैन आई डिफाइन द डेंसिटी ऑफ स्टेट इजीली फॉर द क्वांटम सिस्टम? So coming back here now. Now look at now. We're going to count the number of states here, right? The first state, second state, third and fourth state. तो हम क्या करते हैं? I'm going to change the space. I'm going to write down this states in the k space. You know now the k is a wave vector defined by 2 pi by lambda. Yes sir. तो when lambda is given, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी? Tell me. 2 pi by L. Exactly. So pi by L और यहाँ पर 2 pi by L, यहाँ पर 3 pi by L, यहाँ पर 4 pi by L और यहाँ पर similarly n pi by L. Okay. So instead of writing
इन टर्म ऑफ वेवलेंथ मैंने किस में लिख दिया, पाई के फॉर्म में, के के फॉर्म में. नाउ इफ आई डू इन द के स्पेस, आई एम गोइंग टू डू दिस कैलकुलेशन इन द के स्पेस. So in the K space, I can define the K here. Let us say on this side, K is varying. ये जो पहले स्टेट है K pi by L, इसको I can show by a dot here, or maybe I can use the different color again. तो ये जो पहला डॉट है, this representing the value of K, which is nothing but a pi by L. Similarly, the next state I can show by another symbol, another dot here, and this is representing the next value of the K, 2 pi by L. Similarly, the third, fourth, and so on. And this way you have many such K states. और चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो वैल्यू 3 पाई बाई एल, और लास्ट में यहां पर क्या जाएगा, n pi by L. So can you now see, I'm almost making the same not diagram. यहां पर क्या था, beats. This is the first beat, second beat, third beat. Instead now what we have, the first quantum state, second quantum state, third quantum state, and so on. Clear this part? Yes, sir. And the way I count the number of beats, the same way I can count the number of quantum states here. So what I'm going to define here is a function now I can call gk dk. Is like a gx dx. Now gx dx क्या है, number of beats in the interval x and x plus dx. तो gk dk क्या होगा, number of states. Number of bits in the Exactly. interval k and k plus dk. So you can say this is the number of, लिख लो चाहो तो, this represents the number of k states. Now you can write down, this represents the number of k states in the interval, number of k states in the interval k and k plus dk. So I can define some region k, and here maybe k plus dk, and in this interval the total number of k states is represented by this quantity called gk dk. कितना होगा, can you write down, ये क्या वैल्यू होगी gk dk की, k plus dk minus k exactly, very good, pi by L k plus dk, minus जैसे यहाँ पर k लिखा हम लोगों ने माइनस k डिवाइड बाई pi by L pi by L, that's correct. तो क्या बन जाएगा ये, L by pi dk. dk. You see, you got the expression for the number of states, number of k states in the interval k and k plus dk. This is so simple, no? कोई डाउट यहां तक? And I can define another symbol rho k, like rho x here. This represents density of bits. तो ये क्या बताएगा, density of the states, am I right? और ये क्या जाएगा, number of states gk dk by dt. by dk. So we're going to use this concept now, this formula, to calculate the density of state in one dimension. So you have to remember only this formula. That ना आपको जो याद रखना है वो बस इतना है कि this gk dk equal to
L upon pi into dk. And then I will let you know कि इस expression से how you can calculate the density of state in terms of energy or in terms of frequency. Fine then. Now let's try to, देखो हम लोगों ने अभी क्या किया है, हमने डिस्कस किया है केस नंबर 1 बाउंडेड मीडियम. Now I'm going to move to case number 2. I can call periodic system. तो ये कैसा था, नॉन पीरियोडिक सिस्टम, और एक ऐसा हम ले रहे हैं यहाँ पे पीरियोडिक सिस्टम. सो पीरियोडिक सिस्टम में आई कैन गिव एग्जांपल. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ सर्कल. You can think example of a orbit around the nucleus. I'm right? A classical concept of orbit around the nucleus. And maybe you must have also heard about Bohr's theory, for example. उस तरह example ले सकते हो. And now if there is a circular loop now this system is periodic. And if wave is produced inside this such system, then this wave you can represent, or maybe I can use again the different color. So if wave is produced, then this wave is going to now look like this way. Now in such periodic system, let us say that this total perimeter, the total perimeter of this loop is, let us say, L. पूरे का पूरा का जो पैरामीटर है L के बराबर है, ठीक है. Then this wavelength, I'm right. Then this wavelength is going to fit inside. Right. And I can tell you कि कौन कौन सी wavelength हो सकती हैं. मैं एग्जांपल लेता हूं आपको मैं. Let's start with the let me make you understand that कि ये जो string थी हमारे पास 0 से लेकर L तक, right? उस string को आपने जैसे मान लो ये string है, इसको आपने bend करके आपने इसको सर्कल का फॉर्म दे दिया, ठीक है, 0 से लेकर L तक का. यानी कि ये लेंथ था, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर L है, तो ये मान लो कि ये पॉइंट 0 है और ये पॉइंट L है. तो जब इसको सर्कल के फॉर्म में लेके आओगे, अंडरस्टैंड नाउ दिस द वेव इनसाइड द वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है, द वेव मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑलवेज. सो फॉर एग्जांपल व्हेन यू गोइंग टू टेक दिस 0 to L इन अ सर्कुलर फॉर्म, ये 0 है और ये L है यहाँ तक. तो ये जो पहला मोड है, दिस मोड कुछ इस तरह का है. नाउ मींस इन द फर्स्ट मोड द वेव विल स्टार्ट लाइक दिस वे and going to end here, but again it's going to start. इसके बाद जब देखोगे, I think I must use the, now after this one, this wave going to like this way, this is going to have this kind of shape. यहाँ पर देखो, at this location you have a discontinuity. Means this kind of wave is not allowed. इसका मतलब first mode is not allowed when you have a circular shape, but the second mode, look at the second mode now, 0 to L. In the second mode, the wave is of this kind. So this wave will start from here
और यहाँ पर जाकर खत्म एंड इसका 0 हो जाएगा, फिर से 0 स्टार्ट होगा, यहाँ पर आएगा और इसके बाद द वेव विल रिपीट एंड द वेव रिपीट यहाँ से होगा फिर से. सो दिस इज गोइंग टू हैव दिस रेपिटेशन नाउ. And you can see now at this location you have a continuity now. Okay, it means this is allowed. It means K pi by L is not allowed, but K 2 pi by L is allowed. Similarly, you can see that the third mode, which is of this nature, am I right? जीरो से एल तक है. जब इसको आगे बढ़ाओगे तो यहां से रिपीट करेगी. सो दिस इज गोइंग टू लुक लाइक दिस वे. एंड अगेन यू कैन सी देयर डिसकंटिन्यूटी. इसका मतलब ये भी अलाउड नहीं है. सो के 3 pi by L is not allowed. But when you go for the fourth one, this one, and when you extend this, यहाँ से यहाँ के बाद this will going to repeat, and you can see there is a continuity now. इसका मतलब K जो है 4 pi by L, this is allowed. So what I'm trying to say here is that when you have a string of length L and उसको bend करके you make a circle, then all those modes are not possible. Which modes are possible? K 2 pi by L is allowed, 4 pi by L is allowed. So simply I can say in such system you're going to have 2 pi by L, 2n pi by L, then exactly 4 pi by L, then 6 pi by L, and so on 2n pi by L. So this kind of modes are allowed. सर डिसकंटिन्यूटी कैसे हो रहा है? आप देखो ना यहाँ पर you take a derivative that go to infinite this point पर. बट सर जब हमने वहां पे डिस्कंटिन्यूटी दिखाया ना पहले केस में, हाँ सर वो नीचे से क्यों नहीं जा रही है वेव? सर वो ऐसे नहीं, क्यों आप ये हो रही देखो है? ना, बिकॉज फुल वेव करने के लिए तो नहीं नीचे से जाना आप है. समझो कि 0 से लेकर L तक का लेंथ है ना. सर ठीक है सर. तो 0 से लेकर L तक का लेंथ है, तो उसके बाद ये मान लो कि 0 से लेकर L तक का लेंथ है, तो एक वेव यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होगा, फिर रिपीट करेगा ना 0 से लेकर ओके L. सर. ओके फिर सर. ओके ये वाला सर. सेक्शन यहाँ से रिपीट होगा. ओके सर. गॉट इट. और यहाँ पर क्या हो रहा है कि फिर ये वाला पार्ट रिपीट होगा ना. कट पेस्ट कर हाँ. दो. ठीक है, ये सेक्शन ओके सर. दोबारा हाँ कट करके लगाना शुरू कर दो आप. बिल्कुल. आप गॉट इट. यस, कोई डाउट यहाँ तक? सर वो अलाउड वाला बता दीजिए. अलाउड वाला क्या? फिर से बता रहे थे सर, नेटवर्क. नहीं, मैंने कहा कि अगर 0 से लेकर L तक का कोई स्ट्रिंग है, अगर उसको आप क्लोज करोगे इस तरह के लूप में, तो जो लूप में क्लोज करोगे तो जैसे ये वाला जो फंक्शन है यहां से यहां तक है, पर जब सर्कल में रखोगे तो रिपीट करेगा अपने आप को. तो इसको कट करके दोबारा लगा लो. ठीक है, ऐसे मतलब दिस पोर्शन विल रिपीट ना. पर जब रिपीट करेगा देखो यहाँ पर यू गोइंग टू गेट अ डिसकंटिन्यूटी. बट जब ये जो सेकंड मोड है, जब उसको कट करके लगाओगे तो यू कैन सी कंटिन्यूटी. राइट? ओके सर. इसका मतलब ये मोड अलाउड है, ये मोड अलाउड है, बट ये मोड अलाउड नहीं होंगे. तो जो मोड अलाउड होंगे कौन से? 2 pi by L, 4 pi by L, 6 pi by L and so on. Now इसी चीज को we can write mathematically also the same thing, because it's a periodic system. तो periodic system में and particle is a free particle, so the wave function, e power I kx, the wave function of free particle कैसे लिखते हैं? a e power I kx. Exactly, I kx. Very good.
So this is the wave function of free particle. Because in this system, the particles are free, it's going to define by this wave function. And because this is a periodic system, right? The function is repeating itself after a period L, am I right? Whatever wave function you are going to have at this position, this will repeat after L. So what I can say that the psi of x is equal to psi of x plus L. It means I can solve it. This becomes what? 1 equal to exponential iota KL. Now this exponential, let us say, I theta, how do you write like a cos theta plus I sin theta? And now e to the power I 2n pi becomes what? What? Cos 2n pi, am I right? Because sin 2n pi becomes 0. And or you can say plus minus. तो मैटर नहीं करते हैं, you can add plus minus, और यहाँ पर तो आपके पास 0 आ जाएगा. Just you can leave it 2n pi, और यहाँ पर 0 आ जाएगा plus minus. तो ये टर्म क्या जाएगी? 1. It means that this function written like a plus minus iota 2n pi. I mean this one, and then you can compare these two, means iota KL equal to plus minus iota 2n pi. Now this I and I cancel out, and from there you can see this K comes out to be what? Plus minus 2n pi by L, where this n can take any value, integer value. You see, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश किया था through diagram कि which are the possible k values, no? 2 pi by L, 4 pi by L, 6 pi by L. The same thing you can derive mathematically also. You see, k comes out to be a 2n pi by L, but this only says that there is a plus minus sign also, and you're going to also have 0 values. It means in the periodic system, you're going to have a k plus minus 2n pi by L. Any doubt? सर हमने फ्री पार्टिकल एनालॉजी कैसे की सर? इसमें हमने फ्री Because- पार्टिकल का वेव फंक्शन कैसे? इसलिए देखो डी ब्रॉगली अकॉर्डिंगली किसी भी ना कोई अगर पार्टिकल है तो उसका कोई नेचर नहीं होता है. इट कैन इधर बिहेव लाइक अ पार्टिकल और इट कैन बिहेव लाइक अ वेव आल्सो, राइट? ओके. But the thumb rule I can tell you, कि when it going to show its particle nature and when it going to show its wave nature. When it is interacting with the matter, am I right? Yes sir. Then it's going to show its particle nature. When there is no interaction, then it is going to show its wave nature. Wave nature. am I right? तो Yes, sir. यहाँ पर क्या है कि ये जो पार्टिकल है, it's moving now, it's inside a fixed orbit, am I right? Yes sir. And it behave like a wave. Okay sir. And whatever potential you're going to have, it is a constant. Yes sir. And if potential is constant, then the force will be how much? 0, am I right? 0. And when there is a potential, no doubt, but that potential, let us say it is a constant, then the particle behave like a free particle because there is no force. Okay sir. यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को कि हाउ यू गेटिंग दिस के वैल्यूज नाउ? Yes. ओके I got it. सर या
सर अगर n इक्वल टू 0 रखेंगे तो k की वैल्यू 0 आ रही, जो कि 2 Yes, पाई yes. बाई 4 पाई बाई पे तो नहीं है वहाँ। देखो ये तो देखिए एक ज्योमेट्रिकल मेथड है जिसको जैसे आपको तो एक आइडिया मिल गया कि कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, बट एग्जैक्टली कितनी वैल्यूज होंगी दैट यू कैन गेट एग्जैक्टली फ्रॉम द मैथमेटिक्स. सो मैथमेटिक्स गिव यू द करेक्ट वैल्यूज. So mathematics says that yes, you will go into even values, but even the such you are also going to have a n0 also. ओके सर, थैंक सर Yep. सर जब मैटर इंटरेक्ट किया है तो पार्टिकल नेचर, और जब नहीं इंटरेक्ट किया है तो वेव नेचर, Wave nature. और सर उसके बाद सर नेटवर्क इशू हो गया है तो फिर नहीं सुन पाया। मैंने उसके बाद ये बोला कि ये जो पार्टिकल है, मैं लेट से इन दिस फिक्स काइंड ऑफ नो सिस्टम जहां पोटेंशियल कांस्टेंट है, राइट? सो व्हेन द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, लेट से v इज कांस्टेंट, तो जो फोर्स होता है दैट फोर्स इज नथिंग बट अ gradient of Vm, right? And if V is constant, then force will be 0. And there is no force from the particle, then particle behave as a free particle, despite it is in the potential. ओके सर। Okay, तो मैं रिमूव करूं ये सेक्शन? यस सर। So we are dealing now with the periodic system. Now you understand that in the periodic system, I can define the k values. And the k values are now, I can just put the dots here, and then later on I can mention the k values. So this k is 0. Here you can say 2 pi by L. Then here you can say 4 pi by L. On this side, minus 2 pi by L, minus 4 pi by L, and so on. Because k is what? K is plus minus 2n pi by L. Now with the same logic, जो हम लोगों ने logic यहाँ use किया था, I want to calculate the number of states. So I want to calculate this gk dk. Now for the periodic system, so what I can do that, I can define an interval k to, let us say, k plus dk, and I can find the number of states in this interval. वो कितना आ जाएगा? k plus dk minus k divided by 2 pi by L. Exactly. In this case now, it will be 2 pi by L. Now, one more tricky part here. Now, you see, the jitni number of states you have in the positive k side, the same number of states you're also going to have on the negative k side also. So you are counting only the positive k states. तो जितनी प्लस में k states हैं उतनी ही k states कितनी है नेगेटिव ही हैं. तो अभी जो आपने काउंट किया है, यू आर काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द प्लस k साइड. सो उतनी ही नंबर ऑफ स्टेट्स नेगेटिव में भी हैं, तो क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई. एंड यू कैन सी दिस सिंपली बिकम व्हाट? 2 से 2 कैंसिल, दैट बिकम n upon pi into dk. And you say you get the same formula. It means doesn't matter whether system is periodic or non-periodic. The formula of calculating the number of k states in the interval k and k plus dk is always the same. Fine. So let me know यहाँ तक कोई doubt है. Otherwise now I can then tell you how to use this concept to calculate the density of state in the 2D, and maybe I can give homework for 3D case. समझ में आ गया how to calculate gk dk in one dimension?
So it is immaterial for us. Immaterial की whether it is a non-periodic or a periodic. दोनों के लिए same formula ही use होंगे. So now let's come to the second case. In 2 dimension. And now this is going to be very simple for you because already हम लोगों ने difficult part cover कर लिया है इसका जो हमें logic drive करना था. So I'm going to use the same concept in 2D. So you can say that there is a 2-dimensional system, okay, of let us say expanded in the XY direction, okay. So here you can say this 2D system has a periodicity of L in both dimensions. In both dimension. यानी कि आपके पास एक इलास्टिक मान लो कि कोई शीट है जो x डायरेक्शन मान लो जैसे आप बोर्ड ही है ठीक है दिस बोर्ड इज अ 2-dimension case and I just assume that in 2D in this sheet along the x axis जो periodicity है कितनी है L की है along y axis periodicity कितनी है L की है that is the assumption I'm taking that in 2D system the periodicity is L in both dimensions. Now for 2D system okay, maybe I can give first example कि कैसे 2D में modes क्या का मतलब क्या है. Think about the case of a membrane. एक मेम्ब्रेन ले लिया कोई जैसे मान लो कोई ना तबला है ढोलक है कुछ ले लिया अपना एग्जांपल उसका जो मेम्ब्रेन है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग. ना जैसे आप इस मेम्ब्रेन को हिट करोगे तो व्हाट यू ऑब्जर्व दिस मेम्ब्रेन गोइंग टू ऑसिलेट अप एंड डाउन और कौन कौन से मोड हो सकते हैं ऑसिलेशन के वो आप समझ सकते हो. अब क्या करो यू कैन ना स्प्रेड सम पाउडर पार्टिकल ऑन दिस शीट और उसके बाद आप ड्रम को हिट करो मेम्ब्रेन को हिट करो and if you see the powder particles at the corners I mean at the periphery अगर पाउडर पार्टिकल पेरिफेरी पर आ गए इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि द होल मेम्ब्रेन इज गोइंग अप एंड डाउन क्योंकि पाउडर पार्टिकल इज गोइंग टू अकोमुलेट एट अ प्लेस where there is no movement in the membrane, am I right? But similarly or maybe I think there are various now YouTube video available. What you can do that you can now attach this membrane with the oscillator जिसकी frequency को वेरी कर सकते हो. So when you keep low frequency then this membrane is going to oscillate up and down and the powder particle accumulate or at the corners. In the second mode possibility is that this powder particle accumulate along this side. पाउडर पार्टिकल यहां पर होने का मतलब क्या है कि दिस मेम्ब्रेन अलोंग दिस एक्स इज नॉट रोटेटिंग नॉट ऑसिलेटिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि दिस काइंड ऑफ ऑसिलेशन यू गोइंग टू हैव मींस half membrane is going coming up half membrane going down such that this central part not moving at all. अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर इसका शेप अलग अलग exactly. बिल्कुल 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 और आप थोड़ा सा और शेप चेंज फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे सो मे बी यू कैन गेट दिस शेप पाउडर पार्टिकल गेट यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह का पैटर्न होगा यानी कि दिस प्लस मींस इज कमिंग अप माइनस मींस गोइंग डाउन. So you can see at different frequency this is at frequency f1 this is at f2 this is at f3 you're going to have all different types of shape. So this is the first mode, this is the second mode, this is the third mode and so on. You can get infinite number of modes in 2 dimension. That is the meaning of calling modes in the 2 dimension. So now
how many modes you're going to have, that mathematically you can write down, and that you can calculate from this expression जो हमने लिखा था कि this psi r will be equal to a time exponential. Now in two dimension, I can write like a I k dot r. K will be simply equal to kx I cap and ky j cap, and this r will be x time I cap and y time j cap. So when you open this one, तो क्या बन जाएगा? A time exponential iota kxx plus kyy. You can further write like a iota kxx into I time kyy. इसको ऐसे कर सकते हैं a1 a2 so actually you're doing a separation in the variables, so I can write like a psi x and psi y. So you see that सारे जो variables हैं उनको आपने separate कर लिया, so psi r written like a psi x and psi y. Where the psi x is nothing but a1 exponential iota ax time x, and psi y will be equal to a2 exponential iota ay time y. Now periodicity दोनों में है, तो जैसे हमने सॉल्व किया था psi x equal to psi x plus l, and similarly psi y will be equal to psi y plus l. Now you can solve this equation. So you can see that this will give us iota kx l equal to 1, and this will give you iota ky l equal to 1. And this you write like a exponential plus minus iota 2 and pi, and here also exponential plus minus iota 2 and pi. This means the kx become what? Plus minus two n pi by l, and also the ky becomes plus minus 2n pi by l. Where of course this n vary from 0, 1, 2 and so on. समझ में आ गया यहाँ तक? नाउ हम क्या करेंगे अब टू डायमेंशन में ये जो सारी स्टेट्स जो हमने लिखी हैं इनको हम शो करेंगे इन टू डायमेंशन. So in two dimension what I can do that I can draw now 2D in the k space. So let us say kx, and on this direction you have a ky. Now see, all value of kx कैसा होगा? 0. So you can mention 0, then 2 pi by l, then 4 pi by l, then 6 pi by l, ऐसे ही minus 2 pi by l, minus 4 pi by l, minus 6 pi by l. ऐसी ky की वैल्यू, जब kx की वैल्यू आप सर मेंशन करते रहो. इसके अलावा when the kx is let us say 2 n pi by l, तो corresponding और वैल्यूज मेंशन हो जाएंगे यहाँ पर. So you see that you're going to have all sets of points here.
And remember, each point here representing a one quantum state. Each point here representing one quantum state. So you have so many number of quantum states here. And my task is to calculate number of quantum states. So task here is to calculate the number of quantum states. So for that one, I can now draw a circle here. So I can draw a circle of, let us say, radius k, another circle of radius k plus dk. So I'm going to find now gk dk, and this represents the number of states in the interval k and k plus dk. तो ये जो रीजन है, इस रीजन में कितनी स्टेट्स होंगी वो हमें काउंट करनी है. So in this region, you're going to find the number of states that representing the gk dk. Means you have to count the number of points here, no? Number of dots. And how you can do it? We're going to use again very simple logic. No? For example, in the lower classes, when you try to calculate, for example, when you try to calculate the diameter of circle on the graph paper, तो क्या करते हो? अगर आपने कोई सर्कल बना लिया ग्राफ पेपर पर, तो कैसे निकालोगे इसका एरिया सर्कल का? स्क्वायर काउंट करके सर. स्क्वायर काउंट करके, एग्जैक्टली. तो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स. तो जो एरिया यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा नंबर ऑफ स्क्वायर्स, और हर एक स्क्वायर का एरिया, get the area of the circle, which is nothing but a pi r square, I can say. बट उल्टा देखो, उल्टा भी कर सकते हो आप. नंबर ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हो, वो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द सर्कल डिवाइड बाय द एरिया ऑफ वन स्क्वायर. तो यू कैन काउंट द, हमारा टास्क यहां पर क्या है? आई एम गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स. व्हाई आई एम डूइंग दिस कैलकुलेशन नंबर ऑफ स्क्वायर्स? बिकॉज look at these points, they are going to construct a square here, right? So when you now join the neighboring points, they're going to now construct the squares. So now tell me one more thing. You have n number of squares, and let's now try to figure out number of now these corners. So number of corners कितने होंगे? Can somebody tell me? Multiply by 4. No, वो n के बराबर ही होगा, because each corner going to have a 1/4 contribution. Okay, yes sir. So number of squares equal to number of corners. Of course, this is only valid when the number of squares are very large. All right? अगर मान लो आपके पास एक ही स्क्वायर है, तो you will have 4 corners. All right? बट अगर 2 स्क्वायर्स हैं तो कितने कॉर्नर्स होंगे? 6, कम हो गए 8 की जगह पर. अगर आपके पास ऐसे 4 स्क्वायर्स हैं, तो यू कैन सी नंबर ऑफ कॉर्नर्स विल रिड्यूस. तो फाइनली व्हेन यू हैव n नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो n नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी आएंगे आपके पास. So number of corners, nothing but number of squares. So this logic I'm going to use here. So what I can do, I want to calculate the number of points here, number of corners. वो कितने होंगे? जितने number of squares हैं.
तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ स्क्वायर्स और नंबर ऑफ कॉर्नर्स, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल, अब देखो यहां पर, सो यू हैव दिस जीके डीके जो आपको निकालना है, नंबर ऑफ सर ये आप जो कॉर्नर्स वाला बता रहे थे, एक बार दोबारा बता देंगे, थोड़ा नेटवर्क चला गया था। मैंने कहा कि नंबर ऑफ जितने स्क्वायर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉर्नर्स होंगे, बिकॉज ईच कॉर्नर हैव अ 1/4 कंट्रीब्यूशन। अंडरस्टूड? ओके सर। सो जीके डीके क्या है? नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस एनुलर रीजन। तो इस एनुलर रीजन का एरिया निकाल लो, वो कितना आएगा? बड़े स्क्वायर के एरिया माइनस छोटे स्क्वायर के एरिया। द एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर इज पाई k plus dk whole square minus area of the small square is pi k square. So here, circle, sir. Yeah, exactly. Sorry, circle. So area of the bigger circle minus area of the smaller circle, that is the area of the annular region here, divided by area of the square. Can you tell me what is the area of square? 2 pi by L common square. 2 by whole square. Now you can solve this equation. So this become L upon 2 pi whole square, and here pi you can take common, and this is going to be k square plus dk square plus twice k and dk minus k square. Now this k square and k square cancel out, and you make assumption here. आप assume कर लो कि dk is very small. So if dk is very small, then of course dk square almost goes to 0. So in that case, this gk dk approximately becomes what? L upon 2 pi whole square. Now this term becomes 0. तो क्या बन जाएगा? 2 pi k into dk. Is this clear? The formula of gk dk in 2 dimension. Any questions यहाँ तक? ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं है, then what I can give you as a homework. So लिख लो, find the expression of gk dk in 3 dimension. Find the expression of gk dk in 3 dimension. Or maybe I can simplify your work. Prove that the gk dk in 3 dimension is equal to L upon 2 pi whole cube and 4 pi k square into dk. So you have to prove that in 3 dimension gk dk will be this much. कर लोगे? Yes, sir. Yes. Yes sir. बहुत सिंपल है, देखो क्या करना, मैं हिंट देता हूं कैसे करोगे. You start with this same equation, but now in 3 dimension you're going to have a kz and z time kx. Then you're going to have a psi r will be equal to psi x, psi y and psi z, am I right? Yes, sir. And then you can have a periodicity L in all 3 dimensions, and then you're going to have the value of kx, ky and kz, am I right? और वो सेम ही होगा सभी केस में. वो कितना जाएगा? kx equal to ky equal to kz equal to plus minus 2n pi by L. And what you can do then? You can draw these points in 3 dimension.
If you can take x-axis, y-axis, and the z, right? Then it become a sphere. Sphere. So GK DK निकालना है, but अब सेम लॉजिक यूज करोगे जो हमने यहाँ पर किया था फॉर द केस ऑफ अ स्क्वायर, राइट? अब क्या यूज करोगे फॉर केस ऑफ अ स्फीयर? So you can find the volume of the volume of the outer sphere, volume of the inner sphere divided by the cube, right? Cube volume. Yes, sir. And we will end with this now formula. So this is all about now writing this expression of GK DK in 1D, 2D, and 3D. सर यहाँ पे ये क्या था? स्मॉल स्क्वायर था क्या? ये वाला? हाँ हाँ. This is the area of square. This is the area of the square. So number of corner equal to number of square, ये थोड़ा confusion है. कंफ्यूजन नहीं है. आप देखो ना, आप सिंपल देखो कितने कॉर्नर है बताओ. 4 corner. अब कितने हैं? अब कितने कॉर्नर्स हैं? 4 corner ही है. कॉर्नर्स होंगे. लेकिन देखो जब आपके पास एक स्क्वायर था तो 4 कॉर्नर थे, 2 स्क्वायर हुए तो 6 कॉर्नर्स होंगे. अब बताओ अब कितने कॉर्नर्स हैं 4 पर? 4 corner. नो, हाउ मेनी? आई मीन इनकी बात कर रहा हूँ. कितने हैं? 9. अब जब इसको बढ़ा दोगे अगर आप, तो अगर आपके पास 12 हैं तो कितने कॉर्नर होंगे? 16. तो जो सी ना कि जितने नंबर ऑफ आपके स्क्वायर बढ़ेंगे जो कॉर्नर्स हैं लगातार कम हो रहे हैं. तो फाइनली क्योंकि लॉजिक क्या है यहाँ पर कि वन कॉर्नर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग 1/4. व्हेन जो है इन्फिनिट नंबर ऑफ स्क्वायर्स, अगर आपके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे देन जितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे उतने नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी होंगे, बिकॉज ईच कॉर्नर कंट्रीब्यूटिंग 1/4. आप देख लो, आप करके देख लेना. व्हेन यू हैव लेट 1000 स्क्वायर्स, ओके, ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स. ऑलमोस्ट सेम ही होंगे. ओके, बट उसकी जगह पर अगर आप लेट से 1 मिलियन ऑफ स्क्वायर ले लो, then the number of corners you can find nearly same. So when you have a large number of infinite number of such squares, तो उतने ही number of corners मिलेंगे आपके पास. That is the logic behind that. सर हमने अपॉन में L upon 2 pi लिया है सर, सॉरी 2 pi upon L लिया है. किसमें? तो सर वो मतलब सर जो इंटरवल लिया हमने, Yes. तो पर सर वो तो तब होगा ना जब इन सरफेसेस के ऊपर एटम्स प्रेजेंट हों. एटम्स की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर तो. पर सर गैप तो मतलब जैसे हम बीड्स कंसिडर कर रहे थे, तो गैप तो उन दोनों के बीच का ही होगा ना सर. नहीं, आप यहाँ आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर ये हर एक जो पॉइंट है ये क्या बता रहा है? क्वांटम स्टेट. हाँ जी सर. ये एटम्स नहीं है. हर एक यहाँ पर जो डॉट बताया है मैंने, ये हर एक डॉट क्या बता रहा है? एक क्वांटम स्टेट. हाँ जी सर. तो आपको ये डॉट्स काउंट करने हैं, राइट? यही तो है टास्क आपका, डॉट्स काउंट करने हैं आपको. तो डॉट्स काउंट करने से पहले आप क्या करो, आप स्क्वायर काउंट कर लो कितने बन रहे हैं. जितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे उतने ही डॉट्स होंगे. ये लॉजिक यूज किया मैंने सिंपली. सर आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरवल जो डिनोमिनेटर में लिखा है हमने जीके डीके. हाँ, तो आप देखो ना, ये जो आपके पास जो स्क्वायर बन रहा है ये पॉइंट कौन सा है? ये 0 है. और ये पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 2 pi L. तो इसका एरिया कितना होगा? 2 pi L का होल स्क्वायर.
तो अगर आपके पास एक सर्कल बना रखा है तो सर्कल में कितने स्क्वायर्स होंगे, कैसे निकालोगे? उस सर्कल के एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ दिस Number of squares. Area of square. तो देखो कुल मिलाकर क्या करना है आपको कि ये आपको 3 फार्मूले याद रखने हैं। इन वन डायमेंशन gk dk इक्वल टू L अपॉन पाई इंटू dk। इन टू डायमेंशन gk dk is L upon 2 pi whole square 2 pi a into dk, and in 3 dimension gk dk will be L upon 2 pi whole cube 4 pi a square and dk. I want you not just remember these 3 formulas and that's all, and rest of the calculation you can do easily. सर 1D में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना? हाँ, इन वन डायमेंशन में, बट यहाँ पे नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी जो आपने सर्कल बनाया ना उस सर्कल ने सारी वैल्यू इंक्लूड कर लिया ना, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ओके। बट जब आपने 1D में जो आपने लाइन जो खींची थी ये k और k प्लस डी के, उसने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूड की थी, नेगेटिव नहीं इंक्लूड किया था उसने। तो सर जब भी 1D अपन कैलकुलेट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हर सिचुएशन में करेंगे, मतलब वो करने के बाद आपका ये फार्मूला आ गया, दैट्स ऑल। ओके, तो आपको तो फाइनली ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है। आगे सिर्फ यही यूज होंगे आपको, इसके बाद आपको यही यूज करना है, ठीक है? हर बार आपको यही यूज करना है 1D 2D 3D के अंदर। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा, 5-6 मिनट का है, तो उससे आपको यूज पता चल जाएगा कैसे हम यूज कर रहे हैं इस फार्मूले को, ठीक है? और फिर बाकी हम क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप ये क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डेंसिटी ऑफ स्टेट, find the density of state of free non-relativistic electrons. Find the density of state of free non-relativistic electron in one dimension and also plot rho e versus e। आपको ये करना है, and we will do this for electrons, ठीक है? And how you can do it now? Now see, in the 1D domain, one case में हमारे पास क्या है? gk dk equal to L upon pi into dk, ये फॉर्मूला है। आपको निकालना क्या है? रो ई, राइट? यानी कि इस k को कन्वर्ट करना एनर्जी का फॉर्म में। इक्वल टू h क्रॉस ओमेगा से कन्वर्ट हो जाएगा ना, ओमेगा इक्वल नहीं। नाउ लुक एट, हमारे पास क्या है? वी हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट? नाउ फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कितना होता है? 1/2 h cut square mv square, nothing but p square by 2m, nothing but h cut a square by 2m। तो आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है, E इक्वल टू h कट स्क्वायर k स्क्वायर बाई 2m। So for a free particle, the relation between E and K is this much, and this is called dispersion relation. This is called dispersion relation of electron.
and rest is simple. You see, what do you need? dk. तो क्या करो वहां से k निकाल लो, कितना आ जाएगा 2m upon h cut square by into e power half. This implies that the dk will be how much? 2m upon h cut square and 1 by 2 e power minus half into dE. Now you can put this dk in this expression. Now when you put this dk in this expression, the right hand side become function of energy, so left hand side automatically become function of energy. So we can write GED equal to L upon pi. dk की वैल्यू कितनी है 2m upon h cut square and 1 by 2 e power minus half into dE. Clear? You must write down here. This GEDE क्या बता रहा है? Number of energy density between no. GEDE represent the number of लिख लो कहीं पर GEDE represents number of states in the energy interval E and E plus DE. Am I right? So GEDE is the number of states in the energy interval E and E plus DE. Now यहाँ पे एक tricky part है. Tricky part ये है कि when you talk about electron in the different quantum states, no? So for example, when you talk about 1s, one level. So here you can see there can be two electrons, am I right? One with the up spin, other with the down spin, am I right? But when you apply magnetic field, then these two states can be separated out. अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ये दो स्टेट्स अलग कर सकते हो. इसका मतलब किसी भी क्वांटम स्टेट में, किसी भी एनर्जी लेवल में E में, you can have two electrons, am I right? Means there are two states, and these states are in general degenerate, and this degeneracy you can break when you apply the magnetic field. So in the thumb rule क्या है कि आप ये कह सकते हो कि two electrons can stay in the same energy level with the two different spin, plus half and the minus half. But इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे एक स्टेट है. There are two states, and these two states you can separate out. So you have only one energy level, but in this energy level there are two electrons, means there are two quantum states. तो ये जो आपने काउंट किया है, ये काउंट किया है just energy levels. डिजेनरेसी फैक्टर को इंक्लूड करना है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So this 2 here is actually representing the spin degeneracy. ये समझ में आया 2 मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने? क्योंकि एक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जो है कैन स्टे विद द टू क्वांटम स्टेट्स, टू क्वांटम स्पिन. So similarly now I can plot this, I can find the rho E. तो rho E कैसे लिखोगे आप लोग? Number of quantum states divided by DE. तो क्या आ जाएगा? ये DE हटा दोगे, this 2 से 2 फैक्टर कैंसिल हो गया. This become L upon pi time 2m upon h cut square into e की power minus half. So this represents the density of state of electron in a one dimension. And when you plot this density of state as a function of energy, so this is going to be very like
तो यहाँ पर एक दो क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए और फिर हम बाकी कल डिस्कस करेंगे. Find the density of state of electrons in 2D and 3D. Find the density of state of electrons in 2D and 3D. सर 2D 3D के लिए भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. Exactly, just you have to find rho e for electron in 2D and 3D. ये आपका होमवर्क आज का है, सिंपल सा है, ये करके आओ और बाकी हम लोग एंड आल्सो प्लॉट रो ई वर्सेस ई, ये प्लॉट करके भी लेके आना है आपको. ये करके आओ, फिर हम लोग कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसके बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं कल डिस्कस करेंगे इसके हम लोग.